मूकपञ्चशती कटाक्षशतकम् श्लोकास् 31-40। स्नेहान्द्रितां विदलितोत्पलकान्तिचोरां चेतारमेव जगदीश्वरि जेतु कामः। मानोदतो मकरकेतुरसौ दुनीते कामाक्षि तावककटाक्षकृपाणवल्लीम्। श्रौतीं व्रजन्नपि सदा सरणिं मुनीनां कामाक्षि सन्ततमपि स्मृतिमार्गगामी। कौटिल्यमम्ब कथमस्थिरतां च दत्ते चौर्यं च पङ्कजरुचां त्वदपाङ्गपातः। नित्यं श्रुते परिचितौ यतमानमेव नीलोत्पले निजसमीपनिवासलोलम् प्रीत्यैव पाठयति वीक्षणदेशिकेन्द्रः। कामाक्षि किन्नु तव कालिमसम्प्रदायम्। भ्रान्त्वा मोहोस्तबकितस्मितफेनराशौ कामाक्षि वक्त्ररुचिसञ्चयवारिराशौ आनन्दति त्रिपुरमर्दननेत्रलक्ष्मीः। आलम्ब्य देवि तव मन्दमपाङ्गसेतुम्। श्यामा तव त्रिपुरसुन्दरि लोचनश्रीः कामाक्षि कन्दलितमेदुरतारकान्तिः। ज्योत्स्नावती स्मितरुचापि कथं तनोति स्पर्धा महो कुवलयैश्च तथा चकोरैः। कालाञ्जनं च तव देवि निरीक्षणं च कामाक्षि साम्यसरणिं समुपैति कान्त्या। निःशेषनेत्रसुलभं जगतीषु पूर्वम् अन्ये त्रिनेत्रसुलभं तु हि नाद्रिकन्ये। धूमाङ्कुरो मकरकेतनपावकस्य कामाक्षि नेत्ररुचिनीलिमचातुरीते। अन्यन्तमद्भुतमिदं नयनत्रयस्य हर्षोदयं जनयते हरिणाङ्कमौलेः। आरम्भलेशसमये तव वीक्षणस्य कामाक्षि मूकमपि वीक्षणमात्रनम्रम्। सर्वज्ञता सकललोकसमक्षमेव कीर्तिः स्वयं वर्णमाल्यवती वृणीते। कालाम्बुवाह इव ते परितापहारी कामाक्षि पुष्करमद कुरुते कटाक्षः। पूर्वः परं क्षणरुचा समुपैति मैत्रीम् अन्यस्तु सन्ततरुचिं प्रकटीकरोति। सूक्ष्मेऽपि दुर्गमतरेऽपि गुरुप्रसाद साहाय्यकेन विचरन्नपवर्गमार्गे संसारपङ्कनिचयेन पतत्यमुं कामाक्षि गाढमवलम्ब्य कटाक्षयष्टिम्। श्रीमात्रे नमः।